Hello students, good morning all of you. How are you? Now today we have already completed present simple tense. Present indefinite tense we have completed. Now today we will read about present continuous. Okay? Present continuous change into past continuous. How to change present continuous into past continuous? Present continuous डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे. ठीक है? इज इट नाउ सी द लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 1. okay now let us see the example. Ram said to Syam, I am watching TV. Okay, this is present continuous. All of you know very well about this, all the parts of this sentence. Ram is reporter and said is reporting verb, and I am watching TV is reported speech. Okay, now firstly all of you identify this sentence. Reported speech is in present continuous. आपकी जो reported speech है वो present continuous है, तो present continuous change into past continuous. Okay, present continuous जो है वो past continuous में change हो गया. And all of you also know about this. आप सबको इसके बारे में भी पता है. What? Said to change into told. Okay, Ram told Syam. I have already told about ना, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट मिलता है तो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो चेंज होगी. सेड है तो टोल्ड हो जाएगा. यहाँ पे सेज होता तो टेल्स हो जाता. अगर टेल होता तो टेल होता. ठीक, टेल्स होता. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट जैसे होता उसी के हिसाब से यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रहती. तो राम टोल्ड श्याम, कंजक्शन दैट. ओके, कंजक्शन दैट. राम टोल्ड श्याम दैट आई चेंज इनटू, आई किस में चेंज होगा? ही में चेंज होगा. ठीक, अब आपका एम बचा. हियर इज द एम. सो एम चेंज इनटू पास्ट. एम का एम आप एम जो है एम को आप चेंज करोगे वो पास्ट में क्या बनेगा? वॉज. ठीक, राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज watching TV. Okay, now this is clear. Ram said to Syam, I am watching TV. This sentence is clear. अब आपको समझ में आ गया ना? आपको इसको आइडेंटिफाई करने में भी इजी है. सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच मिली है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और इधर आपने ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया. अब ये इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सेड टोल्ड में चेंज हुआ, कंजक्शन दैट का यूज हुआ, और आई ही में चेंज हुआ, एम वॉज. ठीक, राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी. नाउ सेकेंड, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. दे सेड टू रोहित. ओके, दे सेड टू रोहित, वी आर प्लेइंग फुटबॉल. वी आर प्लेइंग फुटबॉल. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. Okay, now change this sentence into indirect speech. They said to change into told. They told Rohit. After that, conjunction that. Okay, they told Rohit that, we change into they. They told Rohit that they are changed into, this is past continuous na, so are changed into were. They were playing football. Okay, now let us
see the negative. Okay, अब हम negative देखेंगे. Firstly, Ram said to Syam, I am watching TV. Ram said to Syam, I am watching TV. Ram said. Okay, this is your negative sentence. Negative direct speech. Ram said to Syam, I am not watching TV. Okay, now change according this. Ram told. Ram told, said to change into told. After that, Syam. Very easy. Ram told Syam. Conjunction that. I change into, according to Ram, he. Am was not watching TV. बस वेरी इजी एंड वेरी सिंपल ऑल्सो. आपको सिंपल में राम सेड टू श्याम आई एम वॉचिंग टीवी था. अभी राम सेड टू श्याम आई एम नॉट वॉचिंग टीवी. अब राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी. वेरी इजी एंड वेरी सिंपल. बस आपको खाली लर्न अच्छे से होना चाहिए रूल, टेंस के रूल. टेंस के रूल वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है और आपको बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस. This is very simple and very easy for all of us. Okay, now next rule. Now next, present perfect change into past perfect. Okay, see here the example. Varun said to Arpit. Varun said to Arpit, I have seen her today. Varun said to Arpit, I have seen her today. Okay, this sentence is I have seen her today. This is in present perfect tense. This reported speech is in present perfect tense. Now change into past perfect. अभी किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सेट चेंज हो जाएगा किस में? टोल्ड में चेंज हो जाएगा. और प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज जब प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में तो हैव का पास्ट क्या हो जाता है? हैज. और हैव का पास्ट हैड हो जाता है. ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है. बस पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आप यूज करते हो तो हैड बीन आ जाता है. ठीक, अब आप हैड सीन हो जाएगा. वहां पे क्या हो जाएगा? हैड सीन. Ram told Syam that Varun said to Arpit that he had seen her today. का हो जाएगा? That day. Okay. Varun told Arpit. Said जो है आपका चेंज हुआ टोल्ड में. Varun told Arpit that conjunction that. I change into he. Have change into had. Seen her that day. Today change into that day. I have already told about this. Today and tomorrow and so many words I have given the table of how to change this word. आपको मैंने इसके सारे सबके टेबल बता दिए ना कि कौन सा वर्ड कैसे चेंज होगा. लिखवा दिया गया है आपको, तो आप उसको लर्न कर लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि टुडे जो है कैसे दैट डे में चेंज हुआ है. वरुण सेड टू अर्पित, आई हैव सीन हर टुडे. नाउ चेंज इनटू
इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज होगा तो वरुण टोल्ड अर्पित दैट he had been her, he had seen her that day. Okay, now next example number 2. Let us see the next example. Sita said, I have already cooked. Okay, now Sita, change into indirect. Sita said, here is no object. Sita said, I change into, according to Sita, C. Sita said that, well, firstly that, conjunction that. Sita said that she had changed into had. Okay, Sita she had already cooked. Okay, Sita said, I have already cooked. This is your direct speech. Sita said that she had already cooked. This is your indirect speech. Okay, now let us see the negative of direct speech. अब हम नेगेटिव इसका देखेंगे डायरेक्ट स्पीच. They said, now this is your in the negative. They said we have not gone to Delhi. Okay, नेगेटिव में आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको नॉट पे ध्यान देना है एंड बाकी फार्मूला आपका सब वैसे ही है एज इट इज. They said, here is no object ना, so said ही रहेगा. They said that, conjunction we change into they. They said that they have changed into had. Okay, not gone to Delhi. They said that they had not gone to Delhi. Is it clear? अब आपका ये नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया. Varun said to Arpit, I have seen her today. Varun told Arpit that he had not seen her today. Sita said, I have already cooked. Sita said that she had already cooked. They said, we have not gone to Delhi. This is your negative. They said that they had not gone to Delhi. Okay, now present perfect continuous, past change into past perfect continuous is completed. Next, now let us see the next tense. Present perfect continuous changes into past perfect continuous. Okay, अब हम देखेंगे present perfect continuous how to change into past perfect में कैसे change होंगे. Okay, now let us see the example number 1. Let us see the example. Tanay said to me, okay, I have been reading for an hour. Now change into indirect. Tanay told, said to change into told. Tanay told me, I change into he. Have changed into had. Firstly, Tanay told me, conjunction that. After that, I change into he and have changed into had been. Okay, Tanay told me that he had been reading an hour. अब आपको ये समझ में आ गया होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी रिपोर्टेड स्पीच थी, आपने रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से चेंज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. बस आपको यही देखना है कि वो रूल क्या था टेंस का जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट को आप आइडेंटिफाई किए. उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उसको आपने. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर हो गया ना. Tanay said to me, I have been reading for an hour.
Tanay told me that he had been reading for an hour. Next example. Now, next sentence. Syam said to Ram, Sita has been playing since morning. Sorry. Syam said to Ram, Sita has been playing since morning. Change into indirect. Syam is your reporter, means subject. Syam said to, change into told. Okay. Syam told Ram, conjunction that, and after that Sita had been playing since morning. Okay. Had been playing since morning. Now Syam said to Ram, Sita has been playing since morning. Okay. Syam told Ram that Sita had been playing since morning. Okay. Now example is clear and completed. Now we will read after that past tense. Okay.